Well, in the past 1 month, Bihar as well as Assam have been battling severe floods. As far as the situation in Assam is concerned, it has certainly been extremely grim given the fact that over 89 deaths have already taken place and about 1.19 lakh hectares of crop have already been damaged. These are the reports that have been filed by my colleagues from Assam. The flood situation in Assam continues to remain grim as many tributaries of the Brahmaputra and the river Brahmaputra itself is on the rise following incessant rain in the hilly terrains of the state. As the flood water level continues to go up, you can see how people have been trying to save their belongings and making their way out of their homes to reach safer places. And the safer place here is the road where they have been living on. Nightmares for them as the river adjacent to the village, which is the river Kapili, continues to be on the rise following the sluice gates of the Kapili Dam being opened. The floodwater level is on the rise at this place in Dharamtul area of Morigaon district, and in all probability the situation might worsen further in the coming days. As we report from Dharamtul in Morigaon district, there have been voices of the people coming in that the flood of Assam should be declared as a national calamity. It has been every year that the flood have been gripping the state, crippling the economy, and every year around 100 to 200 people have been dying because of the floods. However, the center and the state has been working closely in order to rehabilitate and give relief to the people, but the measures that are being taken are not adequate to fight the annual floods, which not only takes place once in a year but thrice every year. This is the first wave, and in the first wave itself, so far 89 people have lost their life, whereas more than 45,000 people have been displaced. These 45,000 people who have been displaced are taking shelter in the relief camps. This is the data which is available with the government, but if we check into the ground reality, the number of displaced people will be more, as over thousands and thousands of people continue to live on the roads or higher places on their own. More than 26 lakh people have been affected as on that by the ravaging floods in the state of Assam. यहाँ पर आप यदि नज़र फहराएंगे तो आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आएंगे। लोगों के घर के अंदर भी पानी घुस गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से अपना बसा खुसा सामान लेकर के पानी के बीच से होकर के घर से बाहर आ रहे हैं। यही तस्वीरें सिर्फ असम के 1 या 2 ज़िले की नहीं है, बल्कि 33 में से 25 ज़िले आप पानी के गिरफ्त में हैं, और ये तस्वीरें हर एक ज़िले की लगभग एक जैसे ही है। हमारे साथ घनकांत मेरी जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो इस गांव के ही निवासी है। यहाँ पर पानी लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। आपका घर में भी पानी घुसा है यहाँ पर? हाँ सर, हमारा घर में है पानी, बहुत ज़्यादा पानी हो गया।
वो पानी से हम लोग को रास्ता में अभी रुका है। कितने दिनों से आप लोग रास्ते पर रह रहे हैं? 10-12 दिन हो गया है। 10-12 दिन हो गया है। यहाँ पर खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? राशन वगैरह आप लोगों को कहाँ से मिल रहा है? और सरकार से चावल देता है और किसी संगठन है ना, और संगठन से वो शीरा चीनी इसे देता है, इसे चलते रहे। इससे गुजारा हो रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी आज देगा, आज भी मैंने शीरा खाना वाना देगा बोल दिया, ऐसे चलता है। ये बाढ़ हर साल होती है यहाँ पर? हाँ, साल में बसर हो गया है, वहाँ में पानी साल पानी आता है। हाँ, वो हमारा वो जो कोपली है ना, वो कोपली में जो पार है ना, वो पार मैंने हाँ ऐसा भांग के वो रास्ता में आ गया कोपली। तो यहाँ पर सिर्फ बाढ़ की ही समस्या नहीं है, लेकिन भूकटाव की जो समस्या है वो भी काफ़ी गंभीर है। भूकटाव के कारण असम के कई गांव नदी में लीन हो गया और यही हाल अब बोरखा गांव की भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नदी अभी भी उफान पर है। पानी लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। नदी का जो तट था वो तट को काटते हुए नदी गांव की ओर धीरे धीरे आगे आ रहा है, जिसके चलते लोगों को बहुत नुकसानों का सामना आने वाले दिनों में करना पड़ सकता है। Every year, hundreds of deaths are reported because of the annual floods. As we speak now, the situation across the state continues to remain grim. This year, so far, 89 people have lost their life in the floods. And if we speak about the annual landslides that also coincides with the floods and the heavy rain, then so far 25 people have lost their life in landslides. The condition continues to deteriorate further as incessant rain over the last few days have again brought the water level of the Brahmaputra and many of its tributaries on the rise. There has been a demand going on now in the state to declare the Assam floods as a national calamity. On the lines of the Ganges rejuvenation project, there are also demands similar for a special project in regards to the river Brahmaputra to contain the annual floods and bring in a permanent solution.